Hello and welcome to the Officers Academy. So today we will be starting with World Geography. Now from exam point of view, World Geography is divided in three sections. First one being World Physical Geography. After that, we will be studying World Political Geography. And lastly, we will be studying the climatology part. So we have three types: physical geography. What are the topics that we study in physical geography? Topic like mountain systems, topic like Earth and its interior, topics like earthquake and volcano. So these are a few topics that we will be studying in the physical geography part. In political geography, we will be studying about different countries, different industries which are located over there, energy resources of these countries, etc. And in the climatology part, we will be studying about the different climate. Okay, so we have a subtopic which is called as climatic zones. So this is what we study in the climatology part. For example, topics like study of monsoon winds, study of the different layers of atmospheres. So this is what we are going to study in total in world geography. So from exam point of view, we have to remember we have three sections: physical geography, followed by political geography, followed by climatology. Let us see the book list as well. So what are the books that we refer for world geography? So we have to get started with the basic NCERT books. Now exactly which NCERT books we are supposed to read. So we have provided you with the books. So just go through only those NCERTs. So these are the NCERTs which are required for world geography. After reading NCERT, there is a book called as Physical Certificate Geography. Now this is a book which has been authored by G.C. Leong. So this is the book that you have to refer for world geography part. So a combination of NCERT plus Physical Certificate Geography by G.C. Leong, this will complete our world geography part. If you go through the papers of prelims examination, at least some 80 to 85% of questions on world geography, you can answer it from the NCERT books and the G.C. Leong book. Okay, so this will be our book list for world geography. Basic concepts of geography. So let us get started with them. So the first concept that we are going to study, we have already studied it in the school days, but then we have to revise it or look at it from a different perspective. So let us start with our first concept, that is the concept of latitudes and longitudes. Now all of you might be knowing this concept of latitudes and longitudes. So let us try to revise it. What are latitudes? Latitudes are nothing but the imaginary horizontal lines drawn on the surface of the earth. Similarly, what are longitudes? Longitudes are nothing but the imaginary vertical lines drawn on the surface of the earth. Now these lines are not physically present on the surface of the earth. So these are as the name suggests, these are the imaginary lines which are drawn to study the earth. Now let us try to understand its significance. इसका importance क्या है ये भी हम देख लेंगे. Now why do we study latitudes? What is the importance of latitudes? Basically, latitudes divide the earth into different climatic zones. ये कैसे होता है ये भी हम देखेंगे. तो latitudes का महत्व क्या है? It divides the earth into different climatic zones. Similarly, longitudes, इसका importance क्या है? It divides the earth into different time zones. So this is the importance of latitudes and longitudes. Now let us start with our first concept, that is the study of
latitudes. So an imaginary line which has been drawn from the center of the earth, which divides the earth into two halves. जैसा हमने पहले देखा था, latitudes are nothing but the horizontal imaginary line. So a horizontal imaginary line drawn on the center of the earth, dividing the earth into two halves. One half is called as northern hemisphere. The second half is called as southern hemisphere. Okay, so the line drawn through the center is called as 0 degree latitude. This is termed as equator. तो अभी हमारा एम क्या है इसमें? फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू रिमेंबर द डिफरेंट लैटिट्यूड. सो फर्स्ट वी हैव स्टार्टेड विद द 0 डिग्री लैटिट्यूड विच इज कॉल्ड एज द इक्वेटर. नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स. तो जैसे अभी हम नॉर्थ में प्रोसीड करेंगे तो इसके बाद क्या रहेगा? 1 डिग्री नॉर्थ, फिर 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, 4 डिग्री नॉर्थ, so on and so forth. Second important latitude is 23.5 degree north. Similarly, in the south, यहां लिख देता हूं मैं 23.5 डिग्री साउथ. तो ये हो गया 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ. Now this 23.5 degree north latitude is called as Tropic of Cancer. तो ये 0 डिग्री हमारा हो गया इक्वेटर. सिमिलरली 23.5 डिग्री साउथ इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इसके ऊपर अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड कौन सा है? 66.5 डिग्री north. So 66.5 degree north. Similarly, in the southern hemisphere, 66.5 degree south. This is called as Arctic Circle. अभी याद रखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा ओशन है? आर्कटिक ओशन. So this latitude is called as Arctic Circle. Similarly, 66.5 degree south is called as Antarctic Circle. Okay. Finally, 90 degree north. This is termed as North Pole. Similarly, 90 degree south. This is termed as South Pole. So, which are our important latitudes? We will again try to revise them. First is 0 degree, which divides the earth into two halves. Northern hemisphere, southern hemisphere. This 0 degree latitude is called as equator. उसके बाद 23.5 degree north called as Tropic of Cancer. Then 23.5 degree south called as Tropic of Capricorn. Next important latitude 66.5 degree north called as Arctic Circle. Next 66.5 degree south called as Antarctic Circle. Last one being 90 degree north, that is the North Pole. 90 degree south, that is the South Pole. So these are our important latitudes. Now what was the concept of latitude? जैसा हमने देखा latitudes का importance क्या था? Latitude divides the earth into different climatic zones. Okay? तो अभी हम देखेंगे that latitudes near the equator. Okay, here the temperature will be warm. ओके, एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर. तो जैसे हम इक्वेटर से दूर चले जाएंगे, दैट इज टुवर्ड्स द 90 डिग्री नॉर्थ और टुवर्ड्स द 90 डिग्री साउथ, व्हाट विल हैपन विद द टेम्परेचर? द टेम्परेचर विल ड्रॉप डाउन. दैट इज द क्लाइमेट विल बिकम मोर एंड मोर कूलर. तो जैसे हम देखते हैं नियर द इक्वेटर, इस रीजन में दैट इज 0 डिग्री टू 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ, हमें कैसा क्लाइमेट मिलेगा? इक्वेटोरियल क्लाइमेट. इक्वेटोरियल क्लाइमेट विल बी हॉट एंड ह्यूमिड. ओके, जैसे हम यहां से प्रोसीड करेंगे नियर द ट्रॉपिक्स, तो हमें कौन सा क्लाइमेट मिलेगा? ट्रॉपिकल क्लाइमेट. देन एज वी प्रोसीड नियर द आर्कटिक रीजन, व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट वी विल गेट? टेम्परेट क्लाइमेट. एंड फाइनली टुवर्ड्स द पोल, व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट? पोलर क्लाइमेट. सो व्हाट इज अवर थंब रूल? एज वन वॉक्स फ्रॉम इक्वेटर towards the pole, what will happen with the climate? The climate will get cooler. So that is why we have seen latitudes divide the globe into different climatic zones.
Now let us see the functions of latitude. जो हमने पहले देखा था that latitude divides the world into different climatic zones. So where exactly these zones are located, we will see that. So close by equator. इस climate को हम क्या कहेंगे? Equatorial climate. Okay? इसी के ऊपर as we move away from the equator, we will come across tropical climate. So within India, the climate that we see near the regions of Andhra Pradesh, Maharashtra or Tamil Nadu, that is in the southern peninsula, this type of climate is the tropical or the subtropical climate. As we move more towards the pole, that is, imagine the continent of Europe, European countries like France, UK. So the climate we find there is टेम्परेट क्लाइमेट. और हम नॉर्थ में जाएंगे तो क्या रहेगा? पोलर क्लाइमेट. सो एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर, लैटिट्यूड्स भी बढ़ते जाएंगे एंड द क्लाइमेट विल कीप ऑन चेंजिंग. सिमिलरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर सेम अप टू 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिकल क्लाइमेट, देन कम्स टेम्परेट क्लाइमेट and near the pole polar climate. So latitude keeps on changing from 0 degree to 90 degree south, 0 degree to 90 degree north. The climate of the region also keeps on changing. So latitudes का function क्या था? It divides the earth into different climatic zones, or it helps us study the different climatic zones of the world. Now that we are done with the latitudes, let us try to see what are the functions of longitudes. Now we will study the function of longitudes. So as we have seen, what is the importance of longitudes? पहले तो ये longitudes है क्या? Longitudes are nothing but the imaginary vertical lines that are drawn on the surface of the earth. What is the function of longitudes? Why it is important? Because it divides the world into different टाइम जोन्स. अब ये एग्जैक्टली कैसे होता है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे. See, many of the times that we say that suppose one of our friend is in USA. So many of the times we say that he is behind time. Suppose one of our friend is in Japan. So we will say that he is ahead of time. तो अगर हमारा कोई दोस्त या रिलेटिव दे स्टे इन दुबई तो वी से दैट कि हमसे 2.5 घंटा पीछे है. इफ एनीबॉडी इज स्टेइंग इन पाकिस्तान वी से दैट आधा घंटा हमसे पीछे है. तो ऐसा ही पीछे वक्त से पीछे है या वक्त से आगे है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. सो ये टाइम जोन्स, व्हाट डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू डिफरेंट टाइम जोन्स, दिस फंक्शन इज डन बाय longitudes. Now what is the exact mechanism? We will try to understand it. Now जैसे हमने पहले एक लाइन ड्रॉ की थी, हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट वाज कॉल्ड एज द latitude. 0 degree latitude, that is equator. Similarly, we draw a line not exactly at the center of the earth but to a little west. Again 0 degree longitude. Now see, this 0 degree longitude, this imaginary vertical line, this is called as prime meridian. Okay, अभी आपको ये ऐसे याद रखना है. Longitudes are also called as, also known as meridians. Okay, 0 degree longitude is called as prime meridian. Okay, अभी देखिए कैसा होगा. 0 degree is prime meridian. Then we have 1 degree east. फिर उसके बाद क्या रहेगा? 2 degree east. After that 3 degree east, 4 degree east, so on and so forth. Similarly 1 degree west. उसके बाद क्या रहेगा? 2 degree west, so on and so forth. Okay, so 0 degree longitude is called as the prime meridian. Then eastern hemisphere, western hemisphere, या हम कहते हैं eastern countries east, eastern countries as well as the western countries.
ओके, सो पर्पस ऑफ लॉन्जिट्यूड्स टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू डिफरेंट टाइम जोन्स. अब ये एग्जैक्टली कैसे होता है ये हम समझने की कोशिश करेंगे. So now let us try to understand the concept of time zones. ये किस पे डिपेंडेंट है? It is dependent on the or it is derived from the longitudes. अभी ये समझने की कोशिश करते हैं. जो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड हमने ड्रॉ की थी इसका नाम क्या था? 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड इज कॉल्ड एज द प्राइम मेरिडियन. ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. फॉलोइंग द 0 डिग्री, इसके बाद क्या रहेगा? 1 डिग्री ईस्ट. सो इसे मैं यहां लिख देता हूं 1 डिग्री ईस्ट. आफ्टर दैट 2 डिग्री ईस्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सिमिलरली this will be 1 degree west, 2 degree west. Now see, to understand the concept of time zones, थोड़ा हमें अर्थ के बेसिक्स में जाना पड़ेगा. We will study this chapter later in the earth and its interior. So let us try to understand this. Now earth makes two kind of movement. First is revolution. So revolution is around the sun, and second kind of movement is rotational movement. Okay, so let us try to understand the rotational movement of earth. Now this axis of the earth, which divides the earth into two halves, this axis of the earth is a tilted axis. Okay, so ये straight नहीं है, unlike जो हम यहाँ ड्रॉ करेंगे ऐसी नहीं है. It is a tilted axis. Now earth rotates around its own axis from west to east. तो ये फिनोमेना हमें याद रखना है. Okay, how is the rotational movement of earth? Earth rotates around its own axis from west to east. So where is the sunrise first? The sun rises first in the east and then west. Okay, तो ये भी एक याद रखिए. Which country is called as the land of the rising sun? So answer comes out to be जापान. इसका लोकेशन कहां पे है? यहां पे. So sunrise पहले कहां पे होगा? जापान में. और जैसे हम आगे फॉर एग्जाम्पल यूएसए विच इज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ओके, सो लास्ट कहां पे होगा? इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ओके, सो सन राइजेस इन द ईस्ट एंड देन इन द वेस्ट. तो इसी पे हमारा टाइम जोन का कंसेप्ट डिपेंडेंट है. लेट अस कम बैक टू इट. नाउ व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू लॉन्जिट्यूड्स? ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि फर्स्ट द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड टाइम डिफरेंस बिटवीन 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन and 1 degree east. Okay, so time difference between for each 1 degree time difference is of 4 minutes. Okay, तो जैसे हम देखेंगे 2 degree east time difference will be of 8 minutes. 3 degree east time difference will be of 12 minutes. 4 degree east time difference will be of 16 minutes. ओके, तो ये एक रूल हमने याद रखना है. 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स. ओके, अभी डिपेंडिंग अपॉन वी आर सीइंग इन द ईस्ट और वी आर कैलकुलेटिंग द टाइम फॉर द वेस्ट. ओके, सो जैसा हमने देखा दैट द ईस्टर्न कंट्रीज वेयर द सन राइजेस फर्स्ट, ईस्टर्न कंट्रीज आर अहेड ऑफ टाइम. सो यहां पे हम क्या लिखेंगे? ईस्ट इज इक्वल टू अहेड ऑफ टाइम. ओके, टाइम डिफरेंस तो हमें पता है 1 डिग्री से आगे अहेड रहेगा. 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स. 2 डिग्री रहेगा ईस्ट रहेगा तो 8 मिनट. 3 डिग्री ईस्ट रहेगा तो 12 मिनट्स. ओके, एंड द वेस्टर्न कंट्रीज, ओके, द कंट्रीज विच लाई टू द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, दिस कंट्रीज आर बिहाइंड टाइम. ठीक है, तो देखिए हम समझ लेते हैं इसे. 1 डिग्री वेस्ट, ओके, ये समय से कितने पीछे रहेंगे? 4 मिनट्स बिहाइंड. 2 डिग्री वेस्ट 8 minutes behind. 3 degree west 12 minutes behind. 4 degree west 16 minutes behind. Okay, clear? So what is our thumb rule? Time difference 1 degree is equal to 4 minutes. अगर ईस्टर्न कंट्रीज है तो हम इसे कैसे साइन लिखते हैं? प्लस. वेस्टर्न कंट्रीज है तो माइनस. ईस्टर्न कंट्रीज आर अहेड ऑफ टाइम, वेस्टर्न कंट्रीज आर बिहाइंड टाइम. ठीक है, और ये कौन डिसाइड करता है? दिस वर्टिकल लाइन्स, दैट इज लॉन्जिट्यूड्स. तो जो हमने देखा था कि लॉन्जिट्यूड्स का काम क्या है? इट डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू डिफरेंट टाइम जोन्स. ओके, सो आई होप दिस कंसेप्ट ऑफ टाइम जोन्स इज बीन क्लियर.
Now let us try to understand the concept of IST, that is Indian Standard Time. Okay, now let us try to understand, it is linked to our concept of longitudes. So Indian Standard Time हम कैसे लिखते हैं? Let us try to understand it. Okay, so if we see the map of India, that is starting from Gujarat up to the extreme corner of Arunachal Pradesh. Okay, so we will come across different longitudes which are passing through Gujarat up to Arunachal Pradesh. So ऐसे अलग-अलग longitudes रहेंगे. Now suppose if a person is traveling from Gujarat to Arunachal Pradesh via train. So do we keep on changing the time in our watch every time we travel like this? Answer comes out to be no. तो ऐसा हम नहीं करते कि बार बार जैसे ट्रेन एक स्टेट से अब एक रीजन से दूसरे रीजन में जाए, हम घड़ी में अपना समय नहीं बदलते. वी फॉलो अ स्टैंडर्ड टाइम. बट अगर हम देखें तो ये जो लॉन्जिट्यूड है विच इज क्लोजर टू द 0 डिग्री, that is prime meridian, and this last longitude in the Arunachal Pradesh, it is a bit far as compared to 0 degree. तो logically इस longitude और इस longitude में time difference रहेगा, because for every 1 degree change there is a time difference of 4 minutes. तो अगर हम दो longitudes देखें तो 8 मिनट, फिर 12 मिनट, 16 मिनट, 20 मिनट एक्सेट्रा. बट क्या हम घड़ी में अपना समय बदलते हैं? Answer comes out to be no. Why? Because we have decided, or India follows one single longitude which is 82 degree and 30 minutes. This dash that we have drawn is called as minutes. This is called as degree. So 82 degree and 30 minutes is. तो अगर हम इसे कंपेयर करें विद अवर फॉर्मूला, दैट इज 1 degree change in longitude is equal to 4 minutes. So देखिए, if we draw the location of India, so this is all 0 degree, that is prime meridian. So location of India is somewhere here, that is on the eastern side. Okay, so eastern side मतलब क्या रहेगा? Ahead. So we use the sign plus, that is positive, ahead of time. So 1 degree is equal to 4 minutes. So now we have to bring it for 82 degree and 30 minutes. So हमें टाइम डिफरेंस कितना मिलता है? 5 hours and 30 minutes. Okay, India is a eastern country, so sign will be plus 5 hours and 30 minutes. So Indian Standard Time is 5 hours and 30 minutes. Ahead of what? Ahead of time at 0 degree prime meridian. This time is called as GMT. What is GMT? GMT is nothing but Greenwich Mean Time. अब इसे GMT क्यों कहते हैं? Because if we see the location of this prime meridian 0 degree, this prime meridian 0 degree passes through a place called as Greenwich, which is near London. Okay, so that is why comparison के लिए हम हमेशा टाइम किससे कंपेयर करेंगे? We will compare any location's time with GMT, which is called as the Greenwich Mean Time. Okay, so if we see worldwide, many of the ships which are traveling to different oceans, तो ये अपना लोकेशन या अपना टाइम कैसे सेट करते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू GMT. कभी अगर आपने आपका सेल फोन स्विच ऑफ किया, उसमें से बैटरी निकाल दी, दोबारा आप री ऑन करे, तो इट आस्क यू टू सेट द टाइम एंड डेट. सो टाइम इज सेट अकॉर्डिंग टू GMT. ओके, तो हम ग्रीनविच से जितना और आगे चलते जाएंगे, टाइम डिफरेंस उतना ही बढ़ते जाएगा. सो हाउ मेनी आवर्स इंडिया इज अहेड ऑफ GMT? सो आंसर विल कम आउट टू बी 5 hours and 30 minutes. क्यों? Because we have decided to choose 82 degree and 30 minutes longitude as our standard time. So I hope the concept of IST, that is the Indian Standard Time, is been clear. Now see, let us try to understand. There is one problem with those countries, ये time zone के concept में, with those countries which have a very vast horizontal expanse. तो ये अपना टाइम कैसे डिसाइड करती है? जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी सी द मैप ऑफ इंडिया, सो इंडिया इज मोर ऑफ अ वर्टिकल कंट्री, बट इफ वी सी सर्टेन कंट्रीज लाइक if we draw the map of USA, so when we compare it with India,
Okay, so USA is more of a horizontal country. Yeah, one more larger country, that is, if we draw the map of Russia. Okay, now Russia is a country which is some part of it, majority part is in Asia, so some part of it is in Europe. So we say that Russia altogether is in Eurasia. So it is so vast that it lies in the continent of Asia as well as in Europe. तो ये अपना टाइम जोन कैसे डिसाइड करते हैं? Because see what the problem is, unlike India, we decided to choose a line which was passing more through its center, that is 82 degree and 30 minutes east. अगर इन्होंने कोई ऐसा एक लॉन्जिट्यूड सिलेक्ट कर लिया जो सेंटर से पास होता है, स्टिल देयर विल बी अ ह्यूज टाइम डिफरेंस. जैसा हम देखते हैं कि इन रियलिटी इफ वी कंपेयर द टाइम इन गुजरात, फॉर एग्जाम्पल सौराष्ट्र रीजन इन गुजरात, if we compare its time with any region in Arunachal Pradesh, so in reality, हालांकि हम घड़ी बदलते तो नहीं है, but in reality Gujarat is 2 hours behind of Arunachal Pradesh. That is, the sun rises 2 hours earlier in Arunachal Pradesh as compared to that of Gujarat. But do we change the time? No, because we follow one standard time, that is 82 degree and 30 minutes east. Now those countries which have a very vast horizontal expanse. Now what is the problem? For example, USA. So even if it selects a longitude which is in the center, फिर भी आप देखिए, यू कंपेयर दिस एक्सट्रीम पॉइंट ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए विथ एनी एक्सट्रीम पॉइंट ऑन द वेस्ट, सो टाइम डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगा. सो सन विल बी राइजिंग फर्स्ट इन द ईस्ट, देन रीचिंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए. तो ये कंट्रीज क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल यूएसए. नाउ यूएसए हैज डिवाइडेड इटसेल्फ इनटू 6 टाइम जोन्स. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज टाइम जोन 1, टाइम जोन 2, 3, time zone 4, time zone 5 and time zone 6. Okay, so a person who is in the region 1 and a person in the region 4 will have 2 different times at a given point of time. ठीक है, मतलब if you are traveling across USA from time zone 1 up to time zone 6, तो 6 बार आपको आपकी घड़ी में समय बदलना है according to the respective time zone. Similarly, a country which has more vast extent, horizontal extent, that is Russia. So Russia has 11 time zones. तो कभी अगर मौका मिले and if you are traveling from the Trans-Siberian Railway from one end of Russia to the other end, तो अगर आप end to end stations travel कर रहे हो तो आपको आपके घड़ी में कितने बार समय चेंज करना है? 11 times. So this is the concept of time zones. Okay, so the countries having horizontal expanse generally क्या करते हैं? They divide their own country into different time zones and follow different times. What is the position with respect to India? We follow 82 degree and 30 minutes east. That is our Indian standard time. That is plus 5 and 30 hours of GMT, Greenwich Mean Time. We will try to see a few current affairs also with respect to the time zones. So why this concept of time zones is in news, ये भी हम देखते हैं. Now understanding the region of India, that is the northeast states or the northeast region. So this northeast region of India has put down a demand of a separate time zone. Okay, so northeast states are demanding a separate time zone. So the concept that we have seen, let us try to understand ऐसा ये क्यों कर रहे हैं. क्योंकि देखिए प्रैक्टिकली हमने क्या देखा है, दैट दिस रीजन इज 2 hours अहेड इफ वी कंपेयर इट टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. सो एक्चुअली द सन इज राइजिंग 2 hours अहेड. ठीक है, तो अगर इस रीजन को एक सेपरेट टाइम जोन मिल गया, सो दिस विल लीड टू सेविंग ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी. ओके, सेकेंड थिंग इज इनका जो एक बॉडी क्लॉक है,
even that will sink in that with the nature. So whenever there is sun rays, देखिए अभी अगर हम एक स्टैंडर्ड टाइम से जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, even though the sun is rising earlier in the northeast region, but they are coming for work late, क्योंकि हम एक स्टैंडर्ड टाइम, फॉर एग्जाम्पल 8 to 5, गवर्नमेंट ऑफिस इज वर्किंग फ्रॉम 8 AM to 5 PM, तो ये हम पूरी तरह फॉलो करते हैं ऑल ओवर इंडिया. बट एक्चुअली क्या हो रहा है, द सन इज राइजिंग क्वाइट अर्लियर इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो एनर्जी एफिशिएंसी भी हो जाएगी, एनर्जी भी बच जाएगी, प्लस दर बॉडी क्लॉक विल सिंक विद द नेचर. दैट इज द राइजिंग साइन ऑफ द सन एंड द सेटिंग टाइम. ठीक है, बट हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड दिस डिमांड of a separate time zone? So till now the answer comes out to be no. The government has not accepted this demand of separate time zones. Okay, so I hope this current affairs issue is clear with you. Now let us try to take some assignment questions as well. So with respect to this basic concepts of geography, assignment में आपको क्या करना है? See, whenever we study geography, so study of geography is incomplete unless we study maps. Okay, so what is one of the demand of the commission examination, let it be UPSC exams या any state PSC, तो ये क्या चाहती है, whatever you study in geography, you make sure कि आप इसे एक बार मैप्स में या आपके एटलास में जरूर देख लीजिए. Which is the atlas that you have to prefer for world geography? So one of the atlas is Orient and Black Swan, तो ये आप प्रेफर कर सकते हो. अनदर वन इज ऑफ ऑक्सफोर्ड, तो इन दोनों में से आप कोई भी एटलास ले लीजिए. ऑक्सफोर्ड हैज लॉट ऑफ डिटेल्स. ठीक है, ओरिएंट एंड ब्लैक स्वान अगर आप, मैं एडवाइस करूंगा फर्स्ट यू गो विद दिस ओरिएंट एंड ब्लैक स्वान. अगर आपके यहाँ अवेलेबल नहीं है देन गो विद द एटलास ऑफ ऑक्सफोर्ड. बट एक एटलास हमें जरूर खरीदना है फॉर studying geography. Now what you have to do in the assignment, we will see that also. ये नाम आप नोट डाउन कर लीजिए. So you have to study geography through maps through this atlas. Now in assignment आप क्या करोगे, assignment questions में first you will enlist all the countries which lie on important latitudes. Okay, so you will make a list of all the countries that lie on important latitudes. इसका मतलब क्या है ये भी हम देख लेते हैं. We will try to see this. What is the meaning of it? Third, we have seen third important latitude, that is 23.5 degrees south, which was called as Tropic of Capricorn. Then 66.5 degree north, 66.5 degree south, that is the Arctic Circle and Antarctic Circle. तो आपको आपका एटलास ओपन करना है एंड यू हैव टू एनलिस्ट द कंट्रीज विच लाई ऑन दिस latitude. So start from west to east. For example, 0 degree latitude. Okay. So हम जब मैप पे देखेंगे, वर्ल्ड मैप पे देखेंगे, तो you will come across different countries in different parts of the continent. ठीक है. For example, in the Asian continent, you will see that equator passes through the country of Indonesia. तो आपको इसकी एक लिस्ट बनानी है from west to east. Okay. So this will be your assignment. तो ये आपको सबके लिए करना है. For equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle and the Antarctic Circle. Okay, so this will be your assignment for the basic concepts. ये आप एक बार assignment एटलास से कर लीजिए. In the next part of the assignment, again we have seen the longitude that we follow for IST, that is the Indian Standard Time. Which was this longitude? 82 degree and 30 minutes east. Okay, so you have to see that this longitude 82 degree 30 minutes east, this passes from which states across India. So you have to enlist the states, find out the name of the states from which this 82.5 degree east longitude
passes through. तो states के आपको नाम निकालने हैं. Again, third assignment. When we talk about India, so we observe very carefully that Tropic of Cancer passes through India. That is 23.5 degree north. Tropic of Cancer passes through India. Again, you have to enlist the states from west to east, जिसमें से Tropic of Cancer पास होता है. तो you have to find the or you have to list down the states through which Tropic of Cancer passes. Okay, so this will be your assignment questions. Being the first topic, that is the basic concepts. तो इसमें ज्यादा असाइनमेंट तो मैं नहीं दूंगा, बट ये वाला कंसेप्ट आप कर लीजिए. कहां से आपको करना है? यू हैव टू डू इट बाय योर एटलास. अगर बाय नाउ अगर आपने एटलास नहीं खरीदा है तो एनसीईआरटी बुक में भी देख लीजिए. जो एनसीईआरटी बुक्स हमने प्रोवाइड की है उसमें देख लीजिए, उसमें भी आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे. So we will end up today for today's lecture, that is the basic concepts of geography. In the next part we will be starting with the planetary system. ये हमारा next chapter रहेगा, that is planetary system and other celestial bodies. So if you wish, before attending this lecture, ये आप पढ़ भी सकते हो आपके बुक्स में, so that you come better prepared or more informed for the lecture. आपने नहीं पढ़ा तो भी no problem. We will try to make all the concepts easier in the second lecture.